Hello बच्चों, let's see this question. The question says H3A is a weak tribasic acid with K1, K2 and K3 के values दिए गए हैं. The value of Px of 0.1 molar H3A solution where Px is equals to minus log X and X is equal to concentration of A3 minus divided by concentration of HA2 minus. तो यहाँ पर ये एक weak tribasic acid है. इसका मतलब इनके equations मतलब reactions कुछ ऐसे रहेंगे. As reactions would be H3A will be in equilibrium with H2A minus plus H plus. यहाँ पर Ka1 की वैल्यू दी गई which is 10 to the power of minus 5. Next comes H2A minus. H2A minus is in equilibrium with Ha2 minus plus H plus. यहाँ पर Ka2 की वैल्यू दी गई which is 10 power minus 9. And next comes Ha2 minus is in equilibrium with A3 minus plus H plus. यहाँ पर Ka3 की वैल्यू will be 10 to the power minus 13. तो H plus यहाँ पर first step से आती है because Ka2 and Ka3 values are very much less than Ka1. तो H plus mainly is from step 1 मतलब ये 1 ये 2 और ये 3 from step 1. तो अब हम H plus कैलकुलेट कर लेते हैं. तो H plus की फॉर्मूला होगी Ka1 into C. तो यहाँ पर H plus would be root over Ka1 की वैल्यू 10 to the power of minus 5 multiplied with concentration 0.1. यहाँ पर concentration 0.1 दी गई है. तो H plus की वैल्यू हो जाएगी मतलब concentration of H plus would be 10 power minus 3. तो next हम Ka3 की देख लेते हैं. Ka3 will be equal to concentration of H plus concentration of A3 minus divided by concentration of Ha2 minus. तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. तो यहाँ पर Ka3 की वैल्यू है 10 to the power of minus 13. यहाँ पर 10 power minus 3 and this is A3 minus divided by Ha2 minus. तो यहाँ से A3 minus divided by Ha2 minus will be equal to 10 to the power of minus 13 divided by 10 to the power of minus 3. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 to the power of minus 10. So now given that this x is equal to, so this is given x is equals to A3 minus की concentration divided by Ha2 minus की concentration that is equal to 10 to the power of minus 10. तो यहाँ पर Px होगा minus log x. तो यहाँ पर इसको Px is equals to minus log 10 to the power of minus 10 होगी. तो यहाँ पर Px की वैल्यू आ जाएगी 10. So the value of Px is 10. मतलब हमारी ऑप्शन बन गई. ऑप्शन D is the correct answer. I hope you understand it well. All the best.